वेलकम, नमस्कार। मैं हूं हरजोत कौर और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं पंजाबी की जगह हिंदी में बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि आज के हमारे मेहमान जो है वो हिंदी समझते हैं, तमिलनाडु से हैं, लेकिन चंडीगढ़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। किस बात की सर्विसेज दे रहे हैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि आज के टाइम में जहां स्टूडेंट स्टडी वीज़ा लगाकर विदेश जाना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आईएलटीएस और पीटीई को क्लियर करने में, अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करने में। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आईएलटीएस ट्रेनर मिसेस शांति जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। तो कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशंस के ज़रिए आप इनके साथ इनसे मिल सकते हैं, कैसे इनसे कोचिंग लेनी है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे ये किस तरह से कोचिंग देते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशन में आईएलटीएस और पीटी की कोचिंग दी जाती है और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो 7 बैंड्स भी लेकर आए हैं। आखिर राज क्या है वही इनसे जानेंगे जी। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, लाइक आज की बात करें, स्टडी वीज़ा तो हर कोई लगवाना चाहता है, लेकिन बेसिक पॉइंट आ जाता है आईएलटीएस और पीटी क्लियर करना, और उसके लिए डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करना बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है स्टूडेंट्स में। जब आप अब डील कर रहे हो, नॉर्थ के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? Well, this is a very good question. I want to talk about IELTS first of all. Not actually North India or South India. It does depend upon the individuals that they are concerned about their language, how they carry about their language. That's matter a lot. Now, English is a simple language. Here we need to concentrate to get more bands. We need to concentrate on grammar, the vocabulary and how they pronounce. So here what happens, since India is a diverse country and we have different languages, so what people mostly we don't converse in English at home. So what happens, we are not a native speakers, so we need to talk more in English and then the fluency comes. And people are lacking because from our childhood we have been learning English, but we don't talk in English. So once we are not very comfortable in talking, the lack of grammar, we forget it. बिल्कुल। Talking about the grammar part, here we need to concentrate more on grammar rather on their simple speaking. So what is actually grammar? Grammar is the words that make you proper sentence. So the children need to more concentrate on grammar part, the vocabulary, and then they'll be able to speak proper English and the fluency comes automatically. So they need to be guided. तो आप समझ ही चुके हैं कि कोई भी भाषा हो, चाहे यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कोई भी भाषा हम देखते हैं, हिंदी, पंजाबी, तो उसका ग्रामर पार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जब आप आईएलटीएस की बात करते हैं, पीटी की बात करते हैं, तब भी आपका इंग्लिश के लिए ग्रामर बेस मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और यही काम किया जाता है कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशन के ज़रिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इनके पास आईएलटीएस की कोचिंग के लिए या पीटी की कोचिंग के लिए आता है, उनका बेस जो है मजबूत किया जाता है, ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी मजबूत की जाती है, ताकि सिर्फ आईएलटीएस के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो सकती है। तो और क्या क्या टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, वो भी मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि कई जगह से स्टूडेंट्स जो है कई कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, उनका आईएलटीएस स्कोर या पीटी स्कोर उतना नहीं आ पाता। टिप्स ज़रूर आपसे चाहूँगी। Tips यही है, actually first we focus on 7 skills in English. That's like grammar, vocabulary, pronunciation, then comes reading, writing, listening and speaking. So these are the skills that we focus, and mainly we focus on grammar skills and the pronunciation and the vocabulary. So that when they are very comfortable with the grammar and the vocabulary and the pronunciation, definitely the rest of the 4 skills they will crack it. So that is what our aim, to start from the basic, give them the group discussion, tell them what it is all about, and we just guide them how to go about it. And each module, whatever we are telling about IELTS, it has 4 modules like writing, reading, listening and speaking. So every module we will be teaching them the tips, we'll be giving them the tips and we'll be teaching them how to handle it and how to get good high score in IELTS एग्जामिनेशन। जी जी जी। सो चंडीगढ़ में इनका जो कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशन का ऑफिस है, यहीं पर कोचिंग सेंटर है। आप मैम से यहाँ पर आकर मिल सकते हैं, लगातार नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। आज की वीडियो में हम अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट पोर्शन में, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब भी दिया जा सके। कोचिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर
कॉल भी कर सकते हैं। एड्रेस भी मेंशन हो रहा है, आप चंडीगढ़ आएँ, मैम से मिलें, कोई भी क्वेरी हो या फिर आप आइल्स की कोचिंग लेना चाहते हैं, अभी तक आपका डिज़ायर्ड स्कोर आप अचीव नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप अपनी क्लासेस शुरू करें ताकि आप अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कर सकें। तो जैसे कि मैंने तो स्टार्टिंग में बताया कि 7 बैंड्स भी आपके स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, लेकिन मैं आपके मुंह से भी जानना चाहूँगी, दर्शकों तक आप भी अपनी बात पहुँचाइए कि कितने टाइम की कोचिंग के बाद, कितनी तैयारी के बाद आपके स्टूडेंट्स कितने स्कोर्स ला रहे हैं? If the students are really good in carrying the language, or they just need 1 month coaching and they will definitely score above 7 plus and 7.5 bands. If the students are lacking in other sessions like grammar and other things, as I said before, then they just need 2 to 3 months. Definitely they will get, because we'll be giving them the first month we'll be teaching them the grammar and the vocabulary and the spoken English, and thereafter we'll enter into the IELTS part, which is again they require 2 months to complete the session, and within 3 months definitely more than 7.5. Okay. It's this thing from my side, they will definitely score it. जी, जैसे कि मैम बता रहे हैं कि 3 महीने में तैयारी करके आप 7 बैंड्स या उससे ज़्यादा बैंड्स भी अचीव कर सकते हैं, तो सही रास्ते पर चलते हुए आप भी अपनी मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आइल्स की, साथ ही साथ पीटी के बारे में भी बात करेंगे। दोनों में फ़र्क कितना है, किसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है? See, actually you can't tell that this is the one that you have to put more effort and this is PT, there is no effort, and this it's equally you have to put the effort, because here we calculate it as a band wise and PT they calculate it in the score wise. It's called a score. It's out of 90 and this is out of 9 bands. So equally all has the 4 modules. Here in IELTS the only one difference is that speaking is done in front of your examiner, but in PT the speaking sessions it carries with your online test only. That's a completely slightly different way. The students mostly they become very comfortable and they understand. So that's the only thing that is different from IELTS. But basically both the things you have to concentrate, you have to put your complete effort, the whole this thing effort, and then you can crack it. So that's very very important for a student, that it's not this is easier or this is difficult. When you work on it, when you put your hard work, definitely both the things will be easier for them. So for that reason we are training our students and we motivate not only to do their subjects, but we motivate them to gain more self confidence, and they can do it on their own. So we develop a self confidence in our students, not to depend on others. So that's our motive, to develop them, the students. बिल्कुल बिल्कुल, I think I've got the point. बिल्कुल था, लेकिन आपका भी कोई सवाल हो, क्योंकि जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आइल्स की और हम अपने नॉर्थ के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत बनी रहती है स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही कि हम कैसे जो है अपना डिज़ायर्ड स्कोर लेके आए। खासतौर पर बात करें तो ओवरऑल 6 आ जाते हैं, 1 या 2 में 5.5 रह जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल की स्थिति बन जाती है कि कहाँ अप्लाई करें, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह नॉट लेस देन 6 ही हर कंट्री मांग रही है। तो इवन मैम जैसे कह रहे हैं कि 2-3 महीने की तैयारी के बाद आप 7 बैंड्स भी अचीव कर सकते हैं। तो बात वही रहती है कि कोचिंग यहाँ पर अच्छी हो, सिखाने वाले अच्छे हो, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना डिज़ायर्ड स्कोर ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, बीच में भी बात की पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की, तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, या बेसिकली स्कूलिंग में भी इतना बेस मजबूत नहीं हो पाता है। Yes, the only thing I just want to tell to all the students is that English is just a language. You need to practice, that is all. Because every language, when you keep speaking, when you keep learning all the grammar and the techniques how to use that language, then you are the master of that language. So don't worry, it's a simple language, you need to be trained, and please do come and visit us. We are in sector 17E, Chandigarh only, so not far away. Can come and we are here to train you. Don't worry, it's just a language, it's not something technical or logical, it's just a language. So everyone can speak. If you can do it, everyone can do it. So that is all my this thing to the students. So have confidence in you, come and meet us. We are here to guide you and help you, and you can success in your life. We will motivate you to do the best and get
this above 7 bands. जी, It's a promise. जी, तो मैम ने तो प्रॉमिस भी कर दिया है, तो जो स्टूडेंट्स निराश हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि शायद नहीं, हमने तो एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करके देख लिया, लेकिन हमारा जो है डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आ सकता, तो उनको ज़रूर यहाँ पर एक बार आना चाहिए, मैम से कोचिंग लेकर देखिए। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मैम के कई स्टूडेंट्स जो है 7 बैंड्स भी अचीव कर चुके हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके भी इतने बैंड ज़रूर आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपका प्रोसेस ज़रूर जानना चाहूँगी, ताकि स्टूडेंट्स और अच्छी तरह से जान सके कि अगर वो चंडीगढ़ कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशन के पास आते हैं IELTS या PTE की कोचिंग के लिए, तो किस तरह से आप उनकी तैयारी शुरू करवाते हैं। हम जान चुके हैं ग्रामर बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से आपके सेंटर में कोचिंग दी जाती है? First thing, when we visit a student, we'll just keep talking to them, counsel them, and we'll understand their capability and ability to speak and write. Okay. So we conduct a test. That's a level test that is conducted in our this thing. So we see their level of the grammar and their writing skills. So according to that, we judge them, and then we understand their level, and then we give them the period of the time, how much time they should contribute for their to develop their language skill. जी. So if the level is very good, above 4 and 5, then they just need 1.5, 30 to 45 days. They just require 45 days. If the level is slightly downwards, then they need at least 1 month for the to learn the grammar part and the pronunciation and the other things, as I said before, and then we will start the coaching for the IELTS or PT, anything else. Immediately we can't start, because it's very difficult for them to understand the passage works and everything in the reading part, and as well as in the writing part, and the way they speak. See, we are not a native speakers, but native speakers they speak in different accent and different slang, so they need to understand. So for that, we'll be giving them the coachings, and spoken English classes will have the group discussions, active based classes, everything. So that we will be doing, and encourage our students to have confidence in themselves, which is very important. So we will first build the confidence so that they can enter into the session of IELTS, and from there we'll carry on for the प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्जाम्स। जी बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर भी आपकी इंग्लिश है वहीं से आपको शुरू करवाया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका लेवल समझकर ही आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जाते जाते एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे कि आप तमिलनाडु की रहने वाली हैं, अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ में आप कोचिंग दे रही हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं साउथ के एरिया की तरफ अगर देखें, वहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छी होती है सबकी, बच्चों की भी, सभी की, लेकिन नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा होता है, या फिर जैसे ग्रामर और वोकैबुलरी की बात करते हैं वो इतना मजबूत नहीं है। क्या फ़र्क लगता है, कहाँ पर कमी है, क्यों इतना फ़र्क है? कमी हम एक्चुअली ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं ग्रामर को बचपन से दे स्टार्ट लर्निंग. Okay. Yeah, even here, I think the schools, every schools, they teach grammar from. The thing is that the people have to accept it and they have to implement it. Implement the grammar in their day-to-day life. Now, what happened actually? People over south, most of the people, they want to speak proper English, and they are trained to speak English and other things. It's not that North India and South India, it's not in that way. People in Punjab or Haryana, they mostly speak, they love to speak their mother tongue. And even comparatively Tamil Nadu or any other state of south, they all speak their mother tongue. So what happened is, lacking is that actually the fluency, that we are not able to continuously speak our language in our day-to-day life. So most of the schools, convent schools in south, they insist on speaking the language. So that's why the students, they speak. See, learning is everywhere. Even in north, people, students, from their childhood, they are learning the same subject, same CBSE or any other Punjab university, Punjab ki state board, maybe you have the language, isn't it? We also teach the same thing. As I am a teacher, I know. I was a teacher also. So I know that we teach the same subject. What is lacking is that we don't insist them to speak in the school. So that is what lacking. I think mostly South Indians, they insist in the convent schools, and mostly nowadays even in the government schools, during that period they need to speak in English and they need to converse with their teacher in English. So that makes lot of difference. So when you speak only, you will find what difficulty you are facing. That confidence will come,
and in front of others you are trying to speak. Otherwise, the students nowadays, they hesitate to speak. बिल्कुल. Even the grown up kids, if you ask them the question, they hesitate to speak because they think that what I am speaking might be wrong. बिल्कुल. So जी. it's a human nature. That's not anything very different from other state to other state. So people here, we don't insist. So we feel okay, comfortable hai, then you go with your language. It's fine. Now they have started, even in our Punjab and other places, they have started speaking in convent schools and other schools. Ji, They are ji. insisting. They are insisting and they are speaking and the students are speaking. But the thing is that nothing is difficult. So don't worry, it's not the state-wise or anything else. It's simple language. So concentrate on your self-confidence. That is very, very important. And we are here to help you out and guide you to enhance your language skills. Ji. So that's a matter. So to enhance your language skills, you need to concentrate more on grammar, vocabulary, as I'm again and again repeating the same thing, because that's very important for every language. Even if I speak Punjabi, I'll be speaking without grammar because I don't know grammar. And even if I speak Hindi also, might be to some extent it might be good, but again I'll speak wrong Hindi because I don't know the grammar part exactly how to speak and how to go about it. जी. So that's, it's a language only, nothing very big what we are going to achieve. But why we need this language, why we need to enhance it, because we are going abroad. This is an international language and every people, they speak English. To communicate to others and to do your studies and to excel in your studies, you need to enhance your language. So don't worry about it. We are here to help you out, and please do come and visit us, and that's it. Anything else you can ask us, you can call us. So we are here to help you out. जी बिल्कुल. तो आप सभी जान चुके हैं कि आइल्स का डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करना है तो आपको किन किन बातों पर फोकस करना है ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके. चाहे आइल्स की बात करें, पीटी की बात करें, इंग्लिश तो वही रहेगी, ग्रामर वही रहेगी, वोकैबुलरी वही रहेगी, पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है. लेकिन आपका कोई सवाल हो तो लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहा है. चंडीगढ़ में कनेक्ट ओवरसीज़ इमिग्रेशन का ऑफिस है, यहीं पर इनका कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आप आइल्स और पीटी की कोचिंग लेकर अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई. It's a pleasure having talking to you all. जी. Students, please keep that in your mind. You can do it and have confidence in you. It's a language, it's nothing else. It's not a history or a geography or a science or something else. It's simple language. जी. So language can be learnt when you know the grammar. So जी. please understand and don't hesitate to come and meet us. We are here to help you out. And thank you so much for the opportunity to speak. जी. सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें. साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें. अगली वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे. तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. गुड बाय.